So, hello friends, मैं मिसेस रेणुका डेविड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल आगरा। सो साइकेट्रिक एग्जामिनेशन के बारे में आज जो हम सीखेंगे। ओके, सो while examining the patient we considered four aspects, जिसको हम SOAP कहते हैं, SOAP। Subjective data, that is the history. Objective data is the physical or mental status examination. A is for assessment and P is for planning. Okay, so we will at this video we will study about mental status examination. So mental status examination जो है वो उसी तरह फंक्शन करता है जैसे एक फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। एक जो फिजिशियन जो फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं वही वैसे ही होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक साइकेट्रिस्ट के लिए। ओके, it serves the same function for the psychiatrist as the physical examination does for the primary care physician. Okay, so mental status examination is used to determine whether the patient is experiencing any abnormality in thinking, reasoning ability, feeling or the behavior, or we can say that it is the assessment of general motor behavior, thought, emotional functioning along with the evaluation of insight, judgment of the patient's present status. So the objective of mental status examination is to assess the mental functioning and present emotional state of the पेशेंट। सो पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटल फंक्शन, पेशेंट के मेंटल फंक्शनिंग और उसके इमोशनल स्टेट को असेस करना। सेकेंड, टू मेक नर्सिंग डायग्नोसिस, to plan and implement nursing care based on the priority need of the patient. So these are the objectives of a mental status examination. So after collecting the demographic data of the patient, which includes name, age, sex, marital status, education, religion, occupation, income, caste, religion, address, date of admission, days of interview, date and time of interview, and who brought the patient. So all this information, after collecting the demographic data of the patient, then we move towards the content of the components of mental status examination, which includes general appearance and behavior, speech, mood and affect, thought, perception, and then cognitive function, which includes memory, orientation, attention concentration, intelligence, abstract thinking, judgment, and insight. Okay, these are the 5 plus 7 12 points which are included, which are the components of mental status examination. यही sequence होता है। सबसे पहले general appearance and behavior, speech, mood and affect, thought, perception, memory, orientation, attention concentration, intelligence, abstract thinking, judgment and insight. Yeah. So सबसे पहले जो है general appearance and behavior, इसमें we will describe about the patient's appearance and the behavior. What is the look of the patient? किस whether the patient is looking to the one's age, older or younger, वो जिस एज का बता रहे हैं उसी एज का लग रहा है या उसे बड़ा लग रहा है या उसे छोटा लग रहा है। whether the patient is properly dressed or not. So you have to check that the patient's clothes are normally dressed, or it is according to season, or it is clean, it is the cleanliness is adequate, inadequate, clean or unkempt. So these are the things we will observe for the patient. Then about the physical appearance like height and weight of the patient. Then grimacing, that is the facial expression, what is the expression of the patient, कैसा है, हैप्पी है, सैड है या कोई और एक्सप्रेशन है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, क्या है, वो पूरा डिटेल उसमें लिखना है। देन उसका बॉडी बिल्ड कैसा है, मेसोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक है या एक्टोमॉर्फिक है, ठीक है। और उसका पोस्चर, वो किस तरह का पोस्चर वो मेंटेन कर रहा है, वो क्लोज पोस्चर है या ओपन पोस्चर। ये बॉडी बिल्ड है। एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एंडोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक जो बिल्कुल लंबे चौड़े या लंबे होते हैं और दुबले पतले होते हैं उनका। मेसोमॉर्फिक मस्कुलर,
एंडोमॉर्फिक, ओके। राउंडोमॉर्फिक राउंड होते हैं और मस्कुलर होते हैं। मेसोमॉर्फिक एथलेटिक होते हैं, ओके। ओपन एंड क्लोज पोस्चर ये है, जो खड़े होने का पोजीशन में ओपन पोस्चर है, ठीक है। और ये क्लोज्ड पोस्चर है, मतलब अपने आप को बंधा हुआ, और जैसे ये बड़ा बैठे हैं, ये अपने आप को बंधा हुआ बैठे और ये बड़े कॉन्फिडेंटली बैठे हैं, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्चर, okay. Then now the comes the behavior या activity of the patient, whether the activity of the patient is increased or retarded. रिटार्डेड मतलब उसको समय लग रहा है कोई भी काम करने के लिए। गेट मतलब द वे द पेशेंट वॉक्स, ओके। उसके स्टेप कैसा है, किस तरह का बैठा है, कैसे खड़ा है, ओके। द वे द पेशेंट इज सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग और लाइंग, ओके। वो स्टैगरिंग है, या छोटे छोटे कदमों से चल रहा है, स्मॉल स्टेप्स है, कॉन्फिडेंट वॉक है, या हाउ कॉन्फिडेंट द पेशेंट इज सिटिंग। सो दिस इंक्लूड्स द गेट। देन कम्स द मोड ऑफ एंट्री, whether the mode of entry was willing or by persuasion or patient was brought by using some physical force, जैसे बांध के या कैसे उसको लेके आए हैं, ठीक है। eye to eye contact is maintained by the patient or it is not maintained or it is difficult to be maintained, बार बार उसको बोलना पड़ता है, ऊपर को आँख से हमें देख के बोलो, ऐसे करके जब हम बोलते हैं उसको। Then psychomotor activity, whether it is normal, it is increased or it is decreased, okay. Rapport, it is established spontaneously or it is difficult to be established or it is established easily, okay. Gestures like grimacing, any other movement like tick, mannerism, on it is normal or odd behavior or there any other compulsive activities are there, okay. Then attitude towards the examiner, whether it is cooperative or non cooperative, ठीक है। ये वो आपका जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर। जनरल अपीयरेंस में आपने सब कुछ देखा, उसका कपड़ा कैसा है, उसका क्लीनलीनेस कैसा है, सब देखा। उसके बाद बिहेवियर में आते हैं कि उसकी एक्टिविटी कैसी है, उसके में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी है कि, या पेशेंट रेस्टलेस है, या उसकी एक्टिविटी कम है, ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। एनी अदर वॉलंटरी मूवमेंट लाइक कन्वर्सिव और डिसोसिएटिव साइंस है, सोशल विड्रॉल या ऑटिज़म है, कंपल्सिव एक्ट like nail biting or any other hallucinatory behavior like अपने आप में अकेले बैठ के बात करना, smiling, crying without any reason, muttering है, they are talking to self है, any other catatonic signs like mannerism, stereotypes, posturing, waxy flexibility, negativism, ambitendency, stupor, echopraxia, psychological pillows या forced grasping, ओके। ये कैटाटोनिक साइंस हैं। पोस्चरिंग का मतलब होता है कि एक ही पोजीशन को बहुत समय तक मेंटेन करना। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं कि जिस पोजीशन को इम्पोज करते हैं, द पेशेंट मेंटेन्स द इम्पोज्ड पोस्चर। कोई भी पोजीशन आप बना के पेशेंट को रख दो, कितना ही ऑकवर्ड क्यों ना हो, कितनी उसको तकलीफ हो ना हो, फिर भी उसको उस पोजीशन को वो मेंटेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नेगेटिविज्म के रेसिस्ट करना, एक्टिविटीज़ को वो जो भी कमांड है, जो भी हम पेशेंट्स को सोचते हैं कि उनसे करवाने की सोचते हैं, उसको जो है अटेम्प्ट टू मूव और दैट इज़ और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट motiveless resistance to all attempt to be moved or to all the instruction। कोई भी मोटिव नहीं होता है, बस उसे नहीं करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेगेटिविज्म। एम्बी टेंडेंसी मतलब कि कैसे करना है नहीं करना है, ये सोचते हैं ना, उसको बोलते हैं एम्बी टेंडेंसी। लाइक इफ़ यू आस्क द पेशेंट टू शो द टंग, देन वो क्या कहते हैं, दैट पेशेंट विल think of whether he should
टेक आउट द टंग और ही शुड कीप इट इनसाइड द माउथ, उसको बोलते हैं एम्बी टेंडेंसी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इकोप्रेक्सिया मीन्स जो पेशेंट देखता है उसी एक्टिविटी को वो रिपीट करता है, पेशेंट रिपीट्स द ऑब्जर्व्ड एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड इकोप्रेक्सिया। साइकोलॉजिकल पिल्लो, यहाँ पर पेशेंट क्या है, ऐसे सोते हैं जैसे उन्होंने पिल्लो रख रखा है, ठीक है, उनको लगता है अपना सिर को उसी तरह उठा के सोएंगे, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल पिल्लो, ओके। ये पोस्चरिंग कहते हैं, ठीक है। Then next comes the speech. In the speech we have to first see what language the patient is speaking. English, Hindi या अदर कोई लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज उसका है उसको लिखना है। फिर ऑब्जर्व द पेशेंट इज वेदर इज म्यूट और ओवर टॉकेटिव, पेशेंट का देखना है कि वो बोल पाता है या बिल्कुल म्यूट है, कुछ नहीं बोल रहा। इनिशिएशन, हु इज टेकिंग द इनिशिएशन फॉर द स्पीच, sometimes the patients they take initiation, sometimes the examiner takes the initiation, so you have to see, you have to note that who has taken the initiation, whether it was spontaneously initiated the speech was, or the patient speaks when spoken to, or patient is mute, okay. Then what is the reaction time of the speech, which was normal, it was delayed, or it was shortened, at what rate the patient is speaking, okay, whether it is normal, it is slow, or is talking very little, or it is rapid or over talkative, whether there is a pressure of speech or poverty of speech is present. पर pressure of speech होते हैं कि how much effort the examiner is exerting on the patient's over the patient's speech, okay. उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ स्पीच। और पॉवर्टी ऑफ स्पीच में पेशेंट्स जो है बहुत कम बातें करता है, ओके। देन द टोन एंड वॉल्यूम ऑफ द स्पीच of the patient, whether it is increased, decreased, low, high or normal pitch. And others includes whether the speech pattern is emotional, it is dramatic, it is loud, whispered, slurred, rhyming, punning, perseveration, neologism, echolalia, circumstantiality, tangentiality, incoherence or irrelevant answer. So you have to observe the manner of speaking and its defect are recorded under the speech, whereas the content and form of speech are recorded in the thought disorder, okay. So ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। सो पनिंग राइमिंग मतलब होता है कि द स्पीच पैटर्न ऑफ द पेशेंट इज़ लाइक ए पोएम, ठीक है, राइमिंग कर रहा है, इट राइम्स ऑल द आइदर मे बी दैट राइमिंग डिपेंड्स अपॉन द not on the meaning but on the music or on the pattern of the speech, okay, like उसको कैसे बोले हम लोग, रोटी मोटी टोटी, इस तरह से उसको राइमिंग करेंगे, ओके। देन पनिंग, पनिंग मीन्स एक ही वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, उसको बोलते हैं पनिंग, मल्टी मीनिंग वर्ड्स को यूज़ करते हैं पेशेंट। देन perseveration of the speech, that persistent repetition of words or themes beyond the point of relevance, that is called perseveration, okay. Then neologism, neologism means using new words, and then echolalia means repeating the words heard, जो भी words सुनते हैं उसी को repeat करते हैं, that is called echolalia. Circumstantiality
Circumstantiality means patient is over talkative, and the patient, when asked some question, the patient will give the answer. Over explanation about the answer. Okay, so that is called circumstantiality. मतलब a pattern of speech communication होता है which is demonstrated by the speaker's inclusion of many irrelevant, unnecessary detail in his speech before he is able to come to the point. Here the patient gives the answer, he comes to the point, but he gives unnecessary or detailed details about the situation, or details about the unnecessary detail देते हैं. Okay, that is called circumstantiality. Tangentiality is just the opposite, where the patient is derailed in between and the patient doesn't reach to the point. Here it is a form of thinking where this or the speech in which the patient tends to wander away from the intended point. He never reaches to the original idea. इतना बोलता है unnecessary details देते हैं कि patient moves away from the point. He get derailed in between. अगर उसको रोक के हम पूछेंगे हमने क्वेश्चन क्या पूछा तो वो भूल जाएंगे. ठीक है, तो वो उस पॉइंट में वहाँ जाकर नहीं पहुँचेंगे. लाइक circumstantiality, they will reach the goal. Okay, incoherent and irrelevant answers. Okay, now after speech you have to write a speech का एक छोटा सा sample लिख लेना है. After speech then you move towards the mood and affect. Okay, so here the patient should be asked about his affective state, about his mood. Okay, so what is mood? Mood is the sustained emotional state that colors a person's entire psychological thinking. Okay, or affect is द आउटवर्ड एक्सप्रेशन और करंट फीलिंग स्टेट. उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसको बोलते हैं अफेक्ट. और मूड इज़ द इमोशनल, उसका इनर फीलिंग को बोलते हैं मूड. ओके, तो यू हैव टू असेस फॉर द मूड of the mood. Assessment of the mood includes testing of the quality of mood, which is assessed subjectively by asking how do you feel. Okay, or objectively by एक्सप्लेनेशन. आपका मन कैसा है, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पूछते हैं और पेशेंट से हम उसका रिफ्लेक्शन या उसका एक्सप्रेशन को हम उसमें टैली करते हैं. सो तो मूड शुड इज़ द मूड अप्रोप्रिएट or not appropriate, it is congruent or incongruent, labile या quick changing of the mood, that is called labile. या उसका emotional expression blunt है, is the effective expression adequate or appropriate. उसका जो facial expression है उसके mood की जैसे appropriate है या जिस situation में आप रख रहे हैं उसके हिसाब से patient का expression है या नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोग mood and affect में compare करते हैं. Okay, so these are the various expression. जैसे खुश है, हैप्पी है, हैप्पीनेस है तो स्माइलिंग होना चाहिए, कंफ्यूज हो तो ऐसे होना चाहिए, सैड है तो आंसू से भरे हैं, सरप्राइज्ड हैं, गुस्सा आ रहा है, एक्साइटमेंट है. ओके, ये फेशियल एक्सप्रेशन है अबाउट डिफरेंट सीजोफ्रेनिक पेशेंट्स, जहाँ पर ये ब्लंट है, बिल्कुल आँख को देखिए आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या सोच रहे हैं या इनका मन कैसा है. ओके, कंस्ट्रिक्टेड अफेक्ट है, ये दिखा तो रहा है ना, मतलब कुछ दिखाना, अपनी उंगली से कुछ जो एक्सप्रेशन कर रहा है वो अपनी शक्ल से एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है. So mood can be pleasurable like euphoric, elation, exaltation and ecstasy. Okay, euphoric mood किसे कहते हैं? Over happiness, that is called euphoric mood. Euphoria, that is excessive feeling of happiness or elation, that is called euphoria. Okay, एंड अनप्लेजरेबल मूड में डिप्रेशन आता है, सैड और ग्रीफ. और अदर्स में एंजाइटी हो गया, इनअप्रोप्रिएट है, एम्बीवैलेंस है एंड मूड
swings. Okay, so components of the moods are stability, उसकी stability देखना है कि कितने देर के लिए उसका मूड सही रहता है, reactivity of mood to stimuli, हाँ, और persistence of the mood. ओके, तो आप उनको चुटकुले सुनाए तो उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, या उसको कोई ऐसी कहानी सुनाए तो उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इन मूड. ओके, सो इफेक्ट में वी ऑब्जर्व अबाउट द क्वालिटी ऑफ इफेक्ट, range of effect, depth and intensity of the effect, and appropriateness of the effect in relation to thought and surrounding environment. Then next comes the thought. Okay, thought interferes with the inference about the thought process and is disorder or made from the speech sample or writing a sample of the speech. Okay, disorder of the form, progression, content, and possession may be present. So you have to ask, see whether the patient is delusional or any thought alienation है या obsessional rumination है, कि क्या है, पेशेंट के थॉट कंटेंट को असेस करना होता है. सो in stream of the thought we see the examination, its spontaneity and productivity, flight of ideas, poverty of the content should be mentioned. The continuity of the thought is assessed. Is it relevant or loosening of association है, tangentiality है, circumstantiality है, verbigeration है, कि perseveration क्या है उसमें, वो सारी चीज़ें हम लोग assess करते हैं in the thought. Okay, in content of the thought you have to assess for the delusion. Okay, delusion is false, fixed and firm belief. Okay, and any other preoccupation about the obsession or phobia. These are the preoccupation. Obsessional thought में preoccupied होता है, it is a irresistible thought होते हैं. ठीक है, explore for persecution, these are the which includes in the delusion. For paranoid persecution, the patient feels that so the others are going to persecute the patient, they are planning a conspiracy, or they are going to kill him, they are going to do some harm to the patient. Paranoid, the patient is having doubt or suspicious. Okay, reference, whether the patient is being referred by others, that patient feels that the others are referring the patient. Grandeur, the patient has a feeling that he is more important, or he is more rich, or he is something special. Okay, jealousy or infidelity, whether the patient is having paranoid about the spouse or about the sexual partner. Then nihilism, when the patient feels that everything is going to finish off. Okay, so then about the thought alienation, it includes thought insertion, whether the patient thinks that the others are inserting the thought in the patient's mind. Thought withdrawal, that his thoughts are being withdrawn. Okay, thought broadcasting, where his thoughts are being broadcasted everywhere. Then assess for the ideas like worthlessness, hopelessness, guilt, hypochondriasis and suicidal ideas. So ये सब content of the thought है. ठीक है, thought में हम लोग stream and form of thought, okay, और content of the thought, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं या ये चीज़ें हम लोग assess करते हैं. ठीक है, then comes the perception. Perception क्या है? is the process of being aware of sensory experience and being able to recognize it by comparing with the previous experience. ठीक है, उसको बोलते हैं perception. Using the sensory, हम अपने 5 इंद्रियों को यूज़ करके जो हम परसीव करते हैं अपने माहौल में, अपने आसपास में, उसको बोलते हैं perception. ठीक है, सो उसको उसमें जो चेंजेस आते हैं उसमें, या पेशेंट में जब हम assess करते हैं, we have to assess for hallucination. Hallucination means false sensory perception in the absence of stimuli. There is no stimuli, but the patient hears the voice, patient sees something, patient has the smell, patient feels that the something is moving on the skin, or patient has some
taste changes in the patient. These are the feeling when the patient has. Okay, so these are the sensory, that is called hallucination. Hallucination is false sensory perception in the absence of stimuli. And illusion, illusion क्या होता है? Misinterpretation of the actual sensory stimuli. sensory stimuli present है पर उसका misinterpretation होता है, इसको बोलते हैं illusion. Okay, depersonalization होता है कि an alteration in the perception of self so that the feeling of one's reality is as if temporary, changed or lost. अपने आप को सोचते हैं कि उसके शरीर में कुछ चेंजेस आ गया है. ठीक है. और डी रियलाइजेशन बोलते हैं एन ऑल्ट्रेशन इन द परसेप्शन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड सो दैट फीलिंग ऑफ रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड इज एज इफ. ओके, टेम्पररी चेंज और लॉस. वो जिस माहौल में रहते हैं वो चेंज हो गया है, वो उसको कहते हैं डी रियलाइजेशन. अपने आप में शारीरिक में चेंज आने को बोलते हैं डी पर्सनलाइजेशन. नाउ कम्स द कॉग्निटिव फंक्शन. कॉग्निटिव फंक्शन को न्यूरो साइकेट्रिक असेसमेंट भी कहते हैं. इसमें असेस करते हैं पहले हाउ द पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल, कितना अलर्ट है पेशेंट. ओके, सो कॉन्शियसनेस मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन नीडेड टू अरोज द पेशेंट. पेशेंट को जैसे एक बार में नाम से बुला लिया तो पेशेंट ने रिस्पॉन्स दे दिया तो पेशेंट इज़ कॉन्शियस. कितना एफर्ट लेना पड़ता है, कितना अलर्ट है पेशेंट, उसको हम लोग वी विल नोट ऑन द कॉन्शियसनेस. ओके, and then we'll assess the grade of level of consciousness, like a patient is confused or somnambulism, and then that is called sleepwalking. Clouding of consciousness है, delirium है, stupor है या coma है. Then we will assess about the memory. So memory में when we assess, we have to validate the information available. So memory is commonly understood as the power to remember, है ना. यादाश्त हम इसे कहते हैं कि हम कितना हम लोग याद रखते हैं. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ मेमोरी इंक्लूड्स द एबिलिटी टू अटेंड टू ए स्टिमुलाई, रजिस्टर एंड रिटेन द स्टिमुलाई एंड एबिलिटी टू रिकॉल. ठीक है, ये इतने प्रोसेस होता है एक मेमोरी में. क्या होता है, हमने स्टिमुलाई को अटेंड किया, कोई भी स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई को अटेंड किया, उसको अपने दिमाग में रजिस्टर किया, उसको रिटेन कर दिया, उसको दिमाग में रख लिया, और जब ज़रूरत हुई तो हमने उसको रिकॉल किया. दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी. ओके, सो उसमें हम लोग वी विल एसेस पर्सन जो पेशेंट में जब हम एसेस करते हैं, विल एसेस फॉर द रिमोट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, immediate memory and recall memory. So after assessing all these things, we will comment as it is intact or it is impaired. Okay, so remote memory में पीछे की बातें, 6 महीने से पहले की बातों को पूछा जाता है, और रिसेंट मेमोरी में कुछ महीनों की बातों को पूछा जाता है, इमीडिएट में कुछ घंटे या कुछ दिनों की बातों को, रिकॉल मेमोरी में कुछ शब्दों को देके उनको रिकॉल करवाते हैं पेशेंट से टाइम लिमिट से, तो दैट इज़ कॉल्ड रिकॉल मेमोरी. सो मेमोरी एसेस करने के बाद उसको कमेंट करते हैं कि इसकी मेमोरी इंटैक्ट है या इम्पेयर्ड है. देन कम्स द ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन इज़ द अवेयरनेस ऑफ हिज पोजिशन इन रेफरेंस टू टाइम, प्लेस, पीपल एंड सर्कमस्टेंस. ठीक है, तो वो कहाँ पर है, किसके साथ है, किस सिचुएशन में है और किस जगह में है, इन सब चीज़ों को जब हम पूछते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन. ठीक है, सो ओरिएंटेशन में पेशेंट में बी ओरिएंटेड और नॉट ओरिएंटेड. ठीक है, सो जो डिसओरिएंटेशन है वो इट इज़ कॉज्ड बाय एक्यूट कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंस affective factor, distractibility, lack of interest और attention. इन कारणों से ही पेशेंट जो है ओरिएंटेड नहीं होता है. Then comes the attention and concentration. Attention होता है the ability to focus, and ability to sustain that focus, that is called concentration. ठीक है, so इसमें हम लोग we assess the test is administered either of these by asking the patient is serially to subtract 7 or 3 from 100 or higher digits. ठीक है, so
we continue till the 5 steps, or we can ask the patient to name the days of the week, names of the month forward and then backward. ठीक है. So you have to write the answer and the time taken to perform the test. So we can comment. अगर ये सही से करते हैं तो we can comment as attention is easily aroused and concentration is sustained. अगर टाइम लेता है या पेशेंट नहीं कर पाता है तो then we comment as the attention is aroused with difficulty and concentration is ill sustained. Then comes the intelligence. So intelligence is the ability to think logically, act rationally and deal effectively with the environment. ठीक है. सो जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में वो किस तरह के एक्ट करता है या किस तरह से उसको डील करता है उस एनवायरनमेंट पे, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी. ठीक है. इसके लिए हम जनरल इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं, जनरल नॉलेज को एसेस करते हैं या सोशल बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, उसके एजुकेशन को और उसके सोशल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस जो हम लोग पूछते हैं. ठीक है. या करंट अफेयर के बारे में पूछ लो. सो वी कैन कमेंट हैज़ गुड, पुअर एंड एवरेज. Then comes the abstract thinking. Abstract thinking is a mental set voluntarily होता है. ठीक है. It is characterized by the ability to assume a mental set voluntarily, shift voluntarily from one aspect of a situation to another, or keep in mind the simultaneously the various aspects of the situation, or grasp the essential of a whole, or to break the whole into parts. ये इसको बोलते हैं abstract thinking. ठीक है. सबको एक साथ मिलाना या उसको टुकड़े टुकड़े करना या जो है सिचुएशन को समझना या एक सिचुएशन से दूसरी जगह चेंज होना, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. ठीक है. सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैन बी असेस्ड बाय आस्किंग द प्रोवर्ब्स, मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब्स. ओके. उसको प्रोवर्ब टेस्टिंग कहते हैं. या सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी को असेस करते हैं कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को उसके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बारे में पूछते हैं. ठीक है. सो उसको जो है वी कैन say that the answer may be overly concrete or abstract. Like for example, अगर आपने प्रोवर्ब टेस्टिंग में आपने पूछा 9 2 11 होना, तो पेशेंट कभी कभी सही आंसर भाग गया कह जाते हैं, है ना. कभी कभी पेशेंट क्या करते हैं, बोलते हैं कि 9 2 11 है, सही है ना. सो इस टाइप के उसको बोलते हैं कि इट इज़ कॉन्क्रीट, और पेशेंट जो है अगर सही बताते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ नॉर्मल. Then comes the judgment. Judgment is the ability to assess a situation correctly and act appropriately within that situation. Both social and test judgment are assessed. Okay. So social judgment is assessed during the hospital stay and during the interview session. Or test judgment is assessed by asking the patient what you will do in certain situation. जैसे एग्जांपल बुक्स में अक्सर यही देते हैं कि अगर आप घर पे है या किसी कमरे में आग लग जाती है तो क्या करोगे. तो उसके वो पेशेंट को जो सही होता है, जो लॉजिकली उस सिचुएशन के बारे में वो क्या समझता है, उसको बोलते हैं जजमेंट. ठीक है. सो उसको लॉजिकल है या इल लॉजिकल है. देन कम्स द insight. Insight is the degree of awareness and understanding a patient has about his psychiatric illness. Okay. So insight is graded in 6 points scale. First degree में complete denial of illness. Second degree slight awareness of being mentally sick and need help but denies at the same time. Third degree में awareness of being mentally sick, blaming it on others or external factors or organic factors. Fourth degree awareness that he is mentally sick and that he is on regular treatment. Okay. And fifth is intellectual insight and sixth is the true emotional insight. So after asking this कि आपको क्या परेशानी है, तो वो क्या कहता है, उस बात को रख के he can comment as present and absent. So thank you for watching this video. और आपको पसंद आए तो उसे शेयर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें. थैंक यू.